Hey everyone, ready to boost your UPSC exam skills? Let's learn about the Home Guards. They're super important for safety in India, but how much do you know about them? Let's start with the basics. Home Guards aren't created by the central government's rules. Each state has its own rules for Home Guards. So, statement 1 is wrong. Next up, statement 2. Are Home Guards like helpers to the police? Yes, they help keep things safe inside the country, help when there are disasters, and help the police in neighborhoods. So, statement 2 is right. Last one, statement 3. Some states have special Home Guard groups near borders and coasts to keep things extra safe. This helps stop people from sneaking in and helps keep a close watch. So statement 3 is also right. So how many statements were correct? 2 out of 3. The right answer is B. Knowing how these groups work is really helpful for your UPSC exams. Keep learning and asking questions. Don't forget to like, share and subscribe for more easy-to-understand videos. Good luck with your studying. Nimste doston, kya app UPSC ki tayari ko aur mjibut karne ke liye tayar hain clear. Home Guards के बारे में जानते हैं ये भारत की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है लेकिन आप इनके बारे में असल में कितना जानते हैं क्लाय बुनियादी बातों से शुरुआत करते हैं होम गार्ड्स केंद्र सरकार के नियमों से नहीं बनाए जाते हर राज्य के अपने नियम होते हैं होम गार्ड्स के लिए तो फ्लागतन गोत है अब दूसरे कदम पर आते हैं क्या होम गार्ड्स पुलिस के मददगार होते हैं जी हाँ ये देश के अंदर सुरक्षा बनाए रखने में मदद करते हैं आपदाओं की समाप्त करते हैं और पुलिस को मामलों में मदद करते हैं तो दूसरा आइकन शी है आखिरी आइकन तीसरा कुछ राज्यों में सीमाएं और तटों के पास खास होम गार्ड्स के ग्रुप होते हैं ताकि सुरक्षा और मजबूती इसे लोगों को कोरिची पे घुसने से रोका जा सकता है और से रखी जा सकती है तो तीसरा कथन बी शी है तो कितने कथन शीदर 3 में से 2 शी जवाब बी है इन समूहों के काम करने के तरीके को जाना आपका UPSC परीक्षा के लिए बहुत मददगार है सीखते रहिए और सवाल पूछते रहिए और हाँ आसान भाषा में समझने वाले वीडियोस के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना अनभूलन आपकी पढ़ाई के लिए शुभकामनाएं